If you had 1 crore rupees, what would you do? Buy a flat or a commercial property or something in Dubai to earn rental income? The truth is, building a real estate portfolio is not about luck, but about strategy. और आजकल investors are not buying things randomly, but they are planning their investment strategically to diversify between appreciation, cash flows, rental income, and liquidity. In this episode, we will talk about how you can go from owning one property to building a solid income generating portfolio step by step. First and foremost, start with defining your goal. आपको एप्रिसिएशन चाहिए तो आप देख सकते हैं हाई डिमांड एरियाज लाइक एसपीआर एंड सोना, जहां पे आप ले सकते हैं प्लॉट और अ फ्लैट विच विल गिव यू हाई एप्रिसिएशन इन years to come. Or if you're looking at cash flows, go for a commercial property which can give you the maximum rental yields. If your budget allows, SEO are the best bets for having a great ROI. And not to forget, high rental yields which Dubai can offer even in a residential zone. These ROI can range between 6 to 8% if you buy something commercial here or a residential in Dubai. Or if your goal is to create a balanced portfolio, you should buy one appreciating asset and one income generating asset like a commercial property. That's the best case scenario if you have the budget that allows it. If you are 35, then probably the best appreciating asset in today's time may be a flat in DLF Privana and a commercial property on Dwarka Expressway or Golf Course Extension Road. You can even look at leased office spaces which offer a higher rental yield, but their appreciation is limited to the increment in the rental in the future. Your goal is like your GPS. Without it, even a good deal can take you in a wrong direction. Start small but think big. भाई सीधा ही 3-5 करोड़ की फ्लैट की जरूरत नहीं है. आप एक छोटे टिकट साइज, लेट्स से 1.5 करोड़ से आप शुरू कर सकते हैं इन अ प्लेस लाइक सोना और न्यू गुड़गांव. इसमें आप 25-40 लाख रुपीस तक की डाउन पेमेंट के बाद लोन यूज कर सकते हैं. टू दिस कैन बी योर स्टेपिंग स्टोन. And don't forget to leverage this property. A smart home loan can be a smart scaling tool for you. For example, अगर आप 1 से 1.5 करोड़ तक का फ्लैट लेते हैं तो you can give a down payment of about 25 to 40 lakh rupees to fund this property and then use the rental income from this property to pay out your EMI and buy a new property in next 3 to 4 years. Second step is to diversify. Don't just buy all similar type of properties. एक आपने जैसे रेजिडेंशियल ले लिया तो नेक्स्ट आप एक कमर्शियल लीजिए. रेजिडेंस गिव यू हायर एप्रिसिएशन एंड इज इजियर टू रीसेल. कमर्शियल इज अ लिटिल लेस एप्रिशिएटेड but gives you a better ROI which can fund your cash flows in case of EMIs and other commitments that you have. If you are looking at global exposure, you can definitely consider Dubai. And if you're looking at liquidity, you can consider REITs. REIT is Real Estate Investment Trust. These are, kind of shares of fractional ownership in a managed property. जैसे Brookfield, and there are many options available in the market. So for example, आपने शुरू किया 3 BHK in सोना 1.5 करोड़ में. उसके बाद आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी pre-leased on Extension Road, like a shared office space maybe, and then you diversified it to Dubai with a small studio apartment giving you rental yields about 7 to 8%. इस तरह आपका रिस्क भी मिटिगेट हो गया, फंड भी डाइवर्सिफाई हो गए, and your liquidity can be managed as and when you require, because real estate is not about owning more, it is about owning smart. Next comes reinvesting and compounding. भाई पहली प्रॉपर्टी के रेंट से नेक्स्ट प्रॉपर्टी फंड करो. फॉर एग्जाम्पल आपने एक 3 BHK लिया था, अब वो तैयार हो गया, उसका रेंट आ रहा है करीब 40,000 रुपए. विथ दैट रेंटल आप एक 50 लाख वर्थ की प्रॉपर्टी फंड कर सकते हैं
like a shared office space. You should also look at investing the tax saving that you get under section 24B and 80C. For example, पहले साल में आपने एक 3 BHK लिया, उसकी रेंटल इनकम आनी शुरू हो गई आपको अबाउट 40,000 रुपीज अ मंथ. 3 साल बाद आप उस रेंटल इनकम से एक नई प्रॉपर्टी फंड कर सकते हैं, लाइक अ शेयर्ड ऑफिस स्पेस, एंड इन्वेस्ट अबाउट 50 odd lakh रुपीज, जो उसकी EMI रेंटल से ही कवर हो जाएगी. आफ्टर 5 years आप इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बाइंग प्रॉपर्टी वन इन इंडिया, मे बी इन गुड़गांव, एंड वन इन दुबई. इस तरह से आप बाय द ईयर ऑफ maybe after 7-8 years you can easily have a portfolio which is giving you a rental income of 1 lakh rupees plus. Don't forget to balance your cash flow and appreciation. Cash flow मतलब rental income वाली property, commercial property in Gurgaon or maybe something in Dubai which can give you 6 to 8% rental yields, and appreciation like a flat in growing corridors of New Gurgaon, Sona or SPR. There's a 70-30 rule. 70% of your fund should go into a stable asset और 30% पे आप bet ले सकते हैं on something aggressive for a short term. Next step is to review and rebalance. भाई हर 3 साल में अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करना ना भूलें. Exit from underperforming assets. You should also consider moving out of हाई डेंसिटी एरियाज. जैसे सोना में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री हो गई तो अब आप उसको सेल ऑफ करके आप SPR या न्यू गुड़गांव में चले जाएं, राइट. और जैसे आपने अगर मे बी एक्सटेंशन रोड पे लगाया है तो एक्सटेंशन रोड से एग्जिट लेके आज टाइम है आपको SPR पे जाने का, टू हैव अ मैक्सिमम गेन ऑन योर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्ट इनटू बेटर यील्डिंग मार्केट्स, एक्सप्लोर न्यू ज्योग्राफीज. एक टाइम था जब गोल्फ कोर्स रोड बेस्ट होता था, फिर एक्सटेंशन रोड आया, फिर SPR, द्वारका एक्सप्रेसवे. सो विथ टाइम मूव फर्दर अवे फ्रॉम द मेन सिटी वेयर द एप्रिसिएशन इज येट टू कम. सो बिल्डिंग अ रियल एस्टेट पोर्टफोलियो इज नॉट अबाउट बाइंग मेनी प्रॉपर्टीज, इट इज अबाउट बाइंग in right order and for the right reason. So start small, diversify your funds, use leverage smartly, and then let the rent and compounding help you build your portfolio over time. Because real estate में wealth बनाना is not an overnight game, but by doing it step by step, one property at a time. If you want us to share the step-by-step guide on how to build your portfolio with the name of the projects in Gurgaon and Dubai you should consider for your investment, comment portfolio and we'll get back to you, or DM us your goal. Thank you for watching Real Estate with Siddhant. Signing off, your very own chartered accountant turned real estate consultant, Vaibhav Sharma. See you next Friday.